Hello everyone. So we are back again with the next module on assertion and reason questions for class 10 science. And in today's module, we are going to discuss metals and non-metals. Before we go ahead, please requesting you all to like and share and subscribe to the channel. And it's me, Manisha Sharma from Matadei School, Delhi, discussing all the assertion and reason questions, probable assertion and reason questions on this chapter, metals and non-metals. Let us go ahead and discuss the first question. So assertion statement is different metals have different reactivities with water and dilute acids. I totally agree to this. In fact, मैं इसको normally जब explain करती हूँ तो मैं normally भी यही बोलती हूँ कि एक particular situation के लिए हम human beings कैसे होते हैं. Probably आपको एक situation में देख के बहुत गुस्सा आएगा, मुझे एक situation में देख के बहुत हंसी आ रही होगी और probably मुझे इतना गुस्सा नहीं आएगा. So we all human beings are different in showing our reactions. So why not metals? Metals also have their own reactivities with water and dilute acid. So they definitely differ. No metal is the same, है ना? Sodium and potassium इतने soft होते हैं, जबकि metals normally इतने hard होते हैं, है ना? Many of them show you malleable properties. Many of them show you ductility. Many of them are sonorous. So it automatically defines that they have different reactivities. Now, the reason is that reactivity of a metal depends on its position in the reactivity series. That's definitely, true, because हमने reactivity series बनाई इसलिए ताकि हमें समझ आए कि कौन सा जो metal है वो किसके साथ कैसी reaction कर सकता है. जैसे displacement reaction. So displacement reaction में हमें पता है ना, जो भी उस particular metal के ऊपर है वही उसे displace कर सकता है, नीचे वाला उसे displace नहीं कर सकता. So no matter how much you keep on trying the reaction might not happen because the reactivities do not match. So A is also correct, reason is also correct, and ultimately reason is explaining the assertion as well. We go ahead to the next statement. When zinc is added to a solution of iron 2 sulfate, that is FeSO4. So Zn plus FeSO4, no changes observed. So for this, you have to recall the reactivity series and see where is zinc and where is iron. Now the reason it is giving is zinc is less reactive than iron. So now the assertion is wrong. Why assertion is wrong? Because when zinc is added to a solution of iron sulfate, जो changes हैं वो हमें बहुत clearly दिखाई नहीं देते हैं, but जो reason है वो true है, that zinc is less reactive than iron. And the third statement that we have is gas bubbles are observed when sodium carbonate is added to dilute hydrochloric acid. मतलब जो sodium carbonate है Na2CO3 plus HCl का reaction हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, and we are saying कि bubbles आ रहे हैं. तो sodium carbonate क्या है? Salt है. और हाइड्रोक्लोरिक क्या है? वो एक एसिड है. सो सॉल्ट प्लस एसिड विल रिलीज सम काइंड ऑफ गैस फॉर श्योर, right? And the bubbles will come out. Now the reason is carbon dioxide is given off in the reaction because sodium carbonate है. So sodium carbonate आपको dissociate करके carbon dioxide ही देगा. तो वो जो bubbling आपको दिखाई देती है वो आपको carbon dioxide की वजह से दिखाई देती है. हाइड्रोजन गैस होता है तो वो pop sound देता है. यहाँ पर आपको carbon dioxide दिखाई देता है. So A is true, R is true, and R is the correct explanation of assertion. Next statement that we have is food cans are coated with tin and not with zinc. So आपके जो food cans आते हैं normally, या आपके cold drink cans भी आएंगे, तो वो tin से होते हैं, वो zinc साथ नहीं होते हैं covered, and उसका reason वो ये दे रहा है that zinc is more reactive than tin, and that's true. अगर हम उसे zinc के साथ करेंगे तो जो भी आप खाना पैक कर रहे हैं, जैसे अभी recently कुछ लोगों ने भी बोलना शुरू किया था कि हम aluminium foil में अपना खाना रैप नहीं करेंगे because aluminium foil ultimately metal है और उससे हमारे खाने को reaction हो सकती है या हमारी चपाती पे reaction हो सकती है. So many people started avoiding it और उन्होंने फिर पेपर रैप्स यूज करने शुरू कर दिए. उन्होंने कहा या तो हम क्लॉथ रैप यूज करेंगे या पेपर रैप यूज करेंगे. सो दे अवॉइडेड दैट. So similarly, zinc is very reactive here, and ultimately, if the food is packed in a tin or packed in a container which is made up of zinc, it's quite probable that reaction हो सकती है. So A is also true, R is also true, and it is completely explaining that. Next assertion that we have is platinum, gold, and silver are used to make jewelry. That's very, very true. But the reason is that platinum, gold, and silver are least reactive metals. Now, ये तो इसका correct explanation है कि platinum, gold और silver react नहीं करते, इसीलिए हम उसको बनाते हैं. But इसमें मैं एक और statement add करना चाहूंगी कि platinum, gold, and silver are the most malleable and ductile elements as well. Malleable and ductile मतलब they can be very easily rolled into sheets and wires, जिसकी वजह से उनको jewelry बनाना बहुत easy हो जाता है.
ठीक है. सो इसमें दोनों स्टेटमेंट्स आप लेके चलिएगा, क्योंकि रीजन में आपको ये भी बोला जा सकता है दैट प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल और डक्टाइल एलिमेंट्स और मेटल्स. सो रिएक्टिव तो नहीं होते, दैट्स फॉर श्योर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लोग नकली का दांत लगाते हैं, सोने का दांत लगाते हैं, सो वो इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि वो रिएक्टिव नहीं होता. सो दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. बट मुझे यहाँ लगा कि मुझे आपको ये चीज एड ऑन करके बतानी चाहिए. तो मेलेबल या डक्टिलिटी की फॉर्म में भी आंसर आए तो आप लिख दीजिएगा, क्योंकि मेलेबल और डक्टाइल होंगे तभी उसकी प्लेट्स बन सकती हैं. ज्वेलरी जब बनेगी वो प्लेट की फॉर्म में ही बनेगी ना, फिर आप उसमें नक्काशी करेंगे, एम्ब्रॉयडरी करेंगे, या मे बी यू विल रोल इट इनटू वायर्स, जैसे आपकी चेन्स बने, या मे बी रिंग्स बनाते हैं हम. सो वो जो रिंग्स बनेंगी तो वो इसलिए ही बनेगी. तो दैट इज व्हाई दे आर मोस्ट मेलेबल एंड डक्टाइल as well. Next statement that we have is carbon reacts with oxygen to form carbon dioxide, which is an acidic oxide. Okay. Now you understand this, that metallic oxides are basic in nature and non-metallic oxides are acidic in nature. So carbon जब oxygen के साथ react करेगा तो वो CO2 बनाएगा, which is acidic. रीजन वो दे रहा है that non-metals form acidic oxides, जो मैंने अभी अभी आपको explain कर दिया है. So A is also true, R is also true, and A is explaining the R, or R is explaining the A very, very nicely. Coke and flux are used in smelting. कोक जो होता है वो हमारा कार्बन होता है, और फ्लक्स जो है वो इम्प्योरिटीज होती हैं. सो द रीजन इज द फिनोमिनन इन विच ओर इज मिक्स्ड विद सूटेबल फ्लक्स एंड कोक इज हीटेड टू फ्यूजन इज नोन एज स्मेल्टिंग. सो A is correct, R is correct, but R is not the correct explanation of A. So coke and flux को हम स्मेल्टिंग में यूज करते हैं, पर बेसिकली स्मेल्टिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम मिनरल से ओर को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और अल्टीमेटली इस ओर से हम एक प्योर मेटल को बनाते हैं. सो ये पूरा प्रोसेस एक मेटलर्जी प्रोसेस होता है, वेयर वी हैव मिनरल में गैंगियो पार्टिकल्स यानी गंदगी भी होती है, और ओर्स भी होते हैं. ओर्स वो होते हैं जो हमारे यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं. तो हम फिर इस ओर को रिड्यूस करते हैं और उससे हम मेटल निकालते हैं, और उस मेटल को रिफाइन करके हम प्योर मेटल बनाते हैं. सो दैट्स द प्रोसेस. Next statement that we have is zinc becomes dull in moist air. ये moist air होएगा, तो zinc becomes dull in moist air. So basically it loses its shine and becomes dull. Maybe because air की presence में Zn plus O2 form करके zinc oxide बनाता है. बट आप उसका रीजन समझते हैं. वो कह रहा है जिंक इज कोटेड बाय अ थिन फिल्म ऑफ इट्स बेसिक कार्बोनेट. सो वो कह रहा है कि जिंक के ऊपर जिंक कार्बोनेट लगा होता है, मॉइस्ट फॉर्म में आके वो कार्बोनेट बनाता है. तो दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज जिंक ऑफ कोर्स जिंक ऑक्साइड बना रहा है, इसलिए वो डल करता है. पर हमारी जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी उसके ऊपर डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है. सो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विल बेसिकली गिव यू व्हाट? जिंक कार्बोनेट. So that's why you have that carbonate forming on the zinc, and ultimately that's why the zinc is becoming dull. So A is true, R is true, and it is correctly explaining it as well. Bronze is an alloy of lead and tin. So bronze is an alloy, metal के combination के साथ बनाया जाता है, and it is a combination of lead and tin. And reason is alloys are heterogeneous mixture of metals with other metals and non-metals to just improvise the property, because somewhere we are not happy with जो भी हमारे पास metals हैं, है ना. अभी आजकल भी अगर आप देखते हैं तो वो अलग अलग टाइप के रोज गोल्ड ज्वेलरी आ गई है, and platinum maybe there is a lot of variety, and diamond and gold and silver maybe silver में भी आपके पास oxidized silver है, pure silver है, black metal है. so आपके पास बहुत सारी varieties हैं, right? so वो क्या है? वो alloy formations ही हैं. so A is definitely true, but R is false, because जो alloys होते हैं ना वो other metals के बनते हैं. non metals के साथ हम उनका example ज्यादातर नहीं लेते हैं, but कुछ कुछ होते हैं. पर जो major problematic word है वो है ये heterogeneous. हेट्रोजीनस नहीं होता, वो होमोजीनस होता है. अगर हेट्रोजीनस होगा तो क्या होगा? यहाँ अगर मेरे पास गोल्ड की कोई चीज है तो यहाँ मेरे पास ब्रॉन्ज की कोई चीज है सपोज, तो मुझे लेड एक अलग जगह दिखेगा, टिन एक अलग जगह दिखेगा, फिर लेड कुछ अलग जगह मिलेगा, फिर टिन कुछ अलग जगह मिलेगा. बट ऐसा नहीं होता है. एलॉयज जब बनाए जाते हैं तो हम टिन भी लेते हैं, लेड भी लेते हैं, और ऑटोमेटिकली उसको जब हम मिक्स करते हैं तो हमें एक प्रॉपर होमोजीनस सोल्यूशन मिलता है, और वो होमोजीनस मिक्सचर होता है. Majority times it's metals, but in some cases we even use non-metals for the alloy formation. Assertion statement we have is zinc can easily displace copper on reacting with a solution of copper sulfate. So जब मैं zinc को copper sulfate में डालूंगी तो मुझे zinc sulfate मिलेगा और copper बाहर निकल जाएगा. That's what the assertion is saying. And reason says copper is more reactive metal as compared to zinc, right? So that's wrong. अगर zinc उसे displace कर रहा है, so zinc is more reactive.
दैट्स व्हाई इट्स डिस्प्लेसिंग, है ना. अगर कोई आपसे पावरफुल होगा तभी तो वो आपको आपकी जगह से हटा पाएगा, आपसे कमजोर होगा तो वो आपको कैसे आपकी जगह से हटा पाएगा. तो जिंक इज डिस्प्लेसिंग कॉपर, सो असर्शन करेक्ट है, बट रीजन गलत है क्योंकि रीजन में उसने कॉपर इज मोर रिएक्टिव आपको दिया है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर. आई एम श्योर आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी. कोई डाउट, कोई कमेंट्स रहे तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं. एंड दिस इज मी साइनिंग ऑफ फॉर दिस एपिसोड. Do follow and like and subscribe to the channel.